ये ना प्रोजेक्टर की और ये जो ओडिया में ठीक है थोड़ा सा मैंने और फैला दिया मतलब कि ऊपर हाँ नहीं ये भी तो है ना ये जो नहीं तो वो इनको ऐसा करना पड़ेगा इतना लेना पड़ेगा पूरा चाहिए नहीं पूरा चाहिए एक ही टाइम पर मेरा ये भी है और वो भी है हाँ बस हो जाएगा इतना अच्छा अगर यहाँ लाइट बढ़ाएंगे तो कम दिखेगा तो एक काम कीजिए ना कि ना ज़्यादा वो हेलो हाँ about data science for investigation of smart materials. So I'll be talking about. Okay, the agenda here is I'll give you a brief introduction of the smart materials and data science basics. Then the core techniques, that is machine learning, modeling, optimization, statistical analysis. Then the applications in aerospace, healthcare, energy innovations, case studies related to this. Then challenges, what are the challenges in data quality, model interpretation, cost. Then future trends in artificial intelligence, machine learning, quantum computing, and collaborations. Then ethics and sustainability. And finally, we'll conclude it. Okay, so now coming to the first part, that is the introduction. Basically, what is data science? Data science, it revolutionizes the smart material innovation by enabling
rapid prediction, design, and optimization of stimuli responsive materials. So this is actually the basic thing that data science does. We have machine learning, which predicts material properties and behaviors. Then we have statistical analysis. It uncovers the patterns, okay, in the complex data sets. Then we have optimization algorithm. It streamlines the multi-objective designs. Then we have the aerospace, which develops adaptive material for aviations. Then in healthcare, it creates advanced drug delivery system. And related to energy, it enhances efficiency in solar cells and grids. This is all concerned with data science. Now, what are smart materials? Smart materials are the materials which dynamically respond to any kind of external stimuli. The external stimuli can be temperature, stress, light, etc. Now, the smart materials like the shape memory alloys are there. They recover shape upon heating. Even if they are heated up, they will recover their shape. If we talk about piezoelectric materials, they generate charge under pressure. If we talk about self-healing polymers, they repair autonomously. Now, why data science is used and what all are the core components of data science that we use to analyze such kind of materials? Now, if we talk about statistics, we deal with hypothesis testing as well as pattern extraction. Now, if we talk about machine learning, it is a kind of predictive algorithm. We develop algorithms for analyzing the data. That is, neural networks are there. If we talk about optimization, there are genetic algorithms, gradient-based methods which are used. Now, big data analytics, it processes large as well as complex data sets. So if we have very large data sets or very complex data sets which cannot be analyzed manually, we apply these techniques. Now, what is the relevance of this data science to material science? Now, it handles the complexity. Now, as we know, the data sets are very huge and very difficult to handle. So, we require some sort of techniques which can simplify the process. So, that is why we apply these techniques to handle such data sets. Then it predicts the behaviors if there is any kind of thermal, mechanical changes. So, in order to find the response to those changes, we use data science techniques. Then it accelerates R&D. Now, how it accelerates research and development? In this case, it reduces trial and error via simulations or virtual testing. So we conduct a sort of virtual testing by running simulations. And that actually decreases the time which would be taken by the actual experimentation. So why data science for smart materials? Why are we applying these techniques of data science on smart materials? Now, data science advantages are, it is predictive power. Now, as we know that machine learning models, they simulate the outcome before experiments. So we are using simulations and can find out what are the outcomes even before conducting any kind of experimentation. Then pattern recognition, obviously the hidden trends in the data set, that is the stress response or correlation, that also we can find out by using the data science techniques. Then scalability, that is high throughout virtual screening of thousands of candidates. So we are running these iterations again and again, and we are trying to find out what are the outcomes. Now, efficiency. This is actually very efficient. Instead of wasting time and money on the real experimentation of any kind of materials, we are using these techniques by running simulations and coming out with the appropriate results. Then outcomes are, it leads to faster innovation. Then it lowers down the cost. Instead of spending a lot on the actual experimentation, we are just running the experimentation through simulations. All right, and we are developing the algorithms in order to find a solution to any kind of data set that is being provided to us. Now, what is the role of mathematical modeling? If we talk about mathematical modeling, can we use it in the smart materials? Is there any kind of application? So yes, there is application of mathematical modeling also. We use these key modeling techniques, that is molecular dynamics. Now, this simulates atomic level interactions. So if there are any kind of interactions at the atomic level, that is polymer chain behavior, if we want to find out, we use mathematical modeling to find it.
Then finite element analysis, that is FEA, it predicts the macro scale stress, strain in the structures. So in any kind of structures, we want to find out about stress or strain. What is the effect of that? So we use the finite element analysis. Now phase field models, that is track material phase changes, that is any kind of shape, memory, alloy, transitions, if they are there, then we can use this technique. Now, analyzing the effectiveness of finite element analysis. How effective is this finite element analysis? Now, first of all, it deals with structural integrity, stress analysis, strain evaluation, geometric modeling, material selection, design optimization. Also, we can come to know about the safety measures which should be adopted during any kind of experimentation later on. And also, if there is any failure which would be involved in the experimentation that we conduct later on. And reliability testing also can be done, whether the tests we are conducting, are they reliable? Should we proceed with it or not? Then thermal analysis can be done through this. Structural engineering also, it is applicable to it. And versatility in applications. Now, this is used for optimizing FEA for engineering applications. So any kind of engineering application we can optimize by using all these processes. Now, the phase field modeling in material science. What is the phase field modeling? What phases need to be followed for testing any kind of material? The first one is we need to identify the need for modeling. Why do we need mathematical modeling? Why do we need to develop any kind of models? So you have to recognize the need for modeling of the microstructures. Then apply the phase field models. Then you need to apply the appropriate models, that is implementing mathematical models to describe different type of phases. After that, simulate phase transitions, that is modeling the changes in material phases over time. With time, what are the changes in the material phases? That has to be identified. Then analyze the microstructural features, that is examining the resulting structures from simulation. What are the resulting structures after we conduct simulation? What is the effect of that? Then design tailored materials. After all this process, we are using insights to create the material with specific properties, the properties that we wanted to have, the properties we had in mind before conducting any kind of testing. Now, machine learning in material design. Machine learning has a widespread application. So there are three types of learning here. We have supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. If we talk about supervised learning, it is further divided into three types. That is, regression models can be there. We can have neural networks, random forecast. The output of all this is predict material properties. This is used to predict what are the basic properties of the particular material that is under study. Then unsupervised learning is we are using the clustering techniques here. Okay, and this leads to grouping of the material by the properties. We can actually create groups of materials by identifying their respective properties. Then if we talk about reinforcement learning, it is used to optimize synthesis parameters. So we can actually optimize the various parameters which are there. And AI-guided fabrication of the materials can also be done. And then it accelerates the material discovery. This is actually decreasing the time span which is required for actual experimentation. Now, this reduces the trial and error. So the error which would be there in your actual experimentation, this would be reduced by this process. Now, statistical analysis for insights. Now, suppose if we want to analyze the smart materials by using statistical techniques, again, we can have the principal component analysis, PCA. Now, basically, what is this? It reduces data sets dimensionality to key variables. So we have a lot of variables in the data set. See, whenever we conduct any kind of survey, basically the data set will consist of too many variables. Now, we have to pick the variables which would be actually important for our analysis. We cannot analyze all the variables present in the data set. So this will actually reduce the data set dimensionality. That is, we'll be having only the key variables. Then the examples here are, we need to identify critical factors. What factors are we considering? Composition, temperature, that will be involved in the study. Now, outcomes will be, it simplifies the complex data and it highlights only the basic trends which are required, which have to be studied. Now, next we have cluster analysis.
Now, it actually creates a grouping of the materials, the smart materials that we have, and shared by the behaviors like self-healing efficiency. The techniques which we use for this are the algorithms like k-means or clustering techniques are used here. Then outcomes are, again, it discovers the material families, and we can actually find out what kind of materials are there under study, and then further we can carry out the experimentation. Now, design of experiments. Now, again, this systematically explores the parametric spaces. Okay, it can be pressure or the pH value of the material. So basically, we are using all these techniques in order to simplify our experimentation so that we do not have to waste much of time and energy on conducting the actual survey. So we are just simplifying the entire process. Okay, so the next one is the cluster analysis. Already discussed. So design of experiments. Now this systematically explores the parametric spaces, that is pressure or the pH value of the materials. Now we use factorial design response surface methodology here in order to find about the pressure or the pH value or any other parameter related to the materials. Then outcomes are, it optimizes synthesis conditions with minimal experiments. So we are reducing the time that would be there in the actual experimentation. Now the impact are, it accelerates discovery by focusing on high impact variable. Why we are using this entire process? In order to focus only on those variables which are important so that we do not waste time conducting the entire experimentation and coming out with no conclusions. Next, we have the optimization algorithms. This is basically for optimizing any kind of process. So here, the genetic algorithms are used. They evolve solutions for multi-objective trade-offs. That is, if we want to study strength versus weight, cost versus the durability of the material. So we use genetic algorithms. Like we want to design any kind of light weight aerospace alloys with optimal load-bearing capacity. So we develop the genetic algorithms, study the algorithms, and we can come to our respective conclusions. Now, gradient-based methods are there. They actually refine the composition using derivatives. So here we are using the derivative techniques. That is for any kind of optimization, doping levels in semiconductors for conductivity. Now, this also gives us a high precision tuning of material properties. So we just come to know about what all properties are there and we need to concentrate on. Then the impact of all this is it enables tailored materials for specific application. Now, suppose if we want to apply any kind of specific techniques or we want any specific outcomes. So we are using all these tailored techniques for coming to the specific outcomes.
This also reduces the iterative experimentation. That is, we do not have to perform iterations again and again, and error also would be reduced. Now, next we have the predictive modeling for material behavior. Now, in this case, we can use the regression models. That is for inputs, that is temperature or pressure has to be studied. And we want to link these to the outputs like strain or conductivity. What is the effect of temperature and pressure on strain and conductivity? In that case, we use regression models. Regression can be linear, polynomial, or neural network based regression. So these are different types of regression which can be used. Now, this is used for predicting thermal expansion of polymers under varying condition. What is the thermal expansion of polymers if the conditions are varying? They are different conditions. Now, predicting phase transition in shape memory alloys. First of all, the first step here in the case study is we have to identify the problem. Why are we studying this particular material? What kind of outcomes are required? So we need to identify the problem under study. That is, we need to recognize the challenge of predicting phase transitions under stress or temperature. What would be the effect of stress or temperature on a particular material under study? Next, we have to collect the historical data. Now, data collection is the most important part of data science because data collection has to be done in an appropriate way by segmentation, by segregation of the data. Now, once we collect the data, that is, we need to gather the strain temperature data from past experiments that have already been conducted. After that comes the third phase. We need to train the ML models. Here we have to develop the machine learning models using the data that we collected through various surveys. After this, we have to apply the ML models. That is, we have to use the trained models to predict the phase transition. What are the phase transitions? By applying various machine learning algorithms as well as techniques. After this, we achieve the accurate predictions. Since we have already collected the data, applied techniques on it, we have run the simulations. So we'll come to the proper prediction and recovery behavior of the design that we were looking for. Next, we have the machine learning driven property prediction. Now, if we want to predict any kind of property related to the smart materials, again, we can use machine learning for that. That is, we can use neural networks. Now, this is used to estimate mechanical, that is tensile strength, and thermal, that is the conductivity related to the materials. Now, we need to train on experimental or simulation data. Again, in this case, the data, the historical data from the past experiments has to be collected and proper techniques have to be applied on it. Now, the impact of this ML-driven property prediction is it replaces costly lab tests with virtual screening. So, we are not conducting any kind of testing in the laboratory. Everything is done with the help of softwares. So, the costly testing that was involved, that cost structure has been decreased. It has been reduced. Also, it enables high accuracy prediction from tailored applications. Since we have already designed various applications or the various techniques which should be applied to get the best possible results. So this has actually decreased the time as well as costing. Now, accelerating sensor material discovery, that is predicting material performance. If we want to predict the performance of particular material, in that case also, we charge generation under the stress. That is, again, the data collection is done and we perform the testing in the appropriate manner. Then sensor material discovery can be done through this. Then application in wearables and also application in robotics. So this has a widespread application in various domains. Now, simulating complex interactions. Now, the impact of this is it bridges the gap between theory and real world performance. Since we are collecting the data, running simulations, so we are bridging the gap between theory and practice or real world applications. Now, this reduces experimental iterations by 40 to 60%. We are not conducting any experimentation in the laboratory. We are doing all the work through softwares. So this is reducing time as well as cost. Now, development of self-healing polymers. Now, again, we have a case study here. First of all, we have to identify the problem related. That is, we need to recognize the challenge of predicting
repair efficiency under stress. Now we are conducting this study considering a parameter that is stress. Then we simulate the bond reformation, that is conducting atomic scale simulations to understand what is the bond reformation in those materials under stress. After that, we assess the durability, that is we evaluate the durability of polymers on macro scale. Then basically what are we doing is we are optimizing the designs, that is designing optimized polymers for aerospace and automotive applications. So finally we have got a result which was required. Now, next we have principal component analysis, that is PCA for data set simplification. Again, if we have a huge data set, see, data sets are not like we'll be having a data of a few only. Data set on a global level might consist of lakhs. So, if we have huge data sets, in that case, for example, we have hydrogel swelling. Now, this is used to identify the key factors, that is the pH value, cross-link density, then driving water absorption. All this can be studied through this. The outcomes are, it is focused experiments for pH responsive drug delivery systems. Then the impact is, it simplifies analysis of complex data sets. Again, the data sets are complex, they consist of various variables, but we have simplified this process. Now, it guides targeted R&D by isolating dominant variables. Again, we will target the variables from the data set and we'll study only those variables. Now, what is the primary purpose of PCA in smart material research? You just need to think about it. We have the 4 options here for predicting material failure, reducing data set dimensionality, optimizing synthesis parameter, generating synthetic data. So what do you think would be? If anybody wants to answer, what are we doing here? Yes. Exactly. It is predicting the material failure. Why are we conducting all the study? So that we don't have to waste time and money in future. So this is what we are doing. Now, if we talk about what is the key aerospace application of smart materials, pH responsive drug delivery, solar cell efficiency, adaptive wing morphing, or biocompatible implants. What can it be? This is all about aerospace applications. Biocompatible implants. That is what we are trying to do. Now, cluster analysis and material discovery. Now, here again, we are using the clustering technique for the material discovery. Now, basically, it groups the materials by shared response patterns. If any kind of common response patterns are there in the materials, we'll group the materials together. That is thermoresponsive, electroactive, photoresponsive. So these are the different types of materials can be there. Now, case we are applying it to aerospace polymers, that is cluster composites by thermal stability, weight, fatigue response. So what is the response of the smart material to all these? Then outcomes are, it identifies high performance candidates for aircraft components. We are designing the components for aircrafts. So the impact are, it enables rapid screening of the material library. Since we have huge number of materials available, but we need to pick the best ones for designing purpose. So it is used for specific applications like heat resistant coating. If we are going for any kind of heat resistant coating, we need to study the materials properly and then we have to pick the best ones out of these. Now, design of experiments. Now, the basic purpose here is systematically optimize parameters. Which are the parameters here? The temperature, pH, time for synthesis, any kind of synthesis that we are going to perform. Now, here we are studying the energy storage catalyst, that is identified optimal conditions like for 80 degrees or pH 9, that is just an example, for high efficiency catalyst. We are actually targeting the high efficiency catalyst here. Now, the outcome is 50% faster development of fuel cell catalyst. So, this will actually enhance the development of the fuel cell catalyst by 50%.
Now, the impact is it reduces experimental trials by 30 to 60%, and it accelerates discovery of the materials. Now, optimization and material design. Again, we can optimize the material designs for specific applications. If we want to go for any kind of specific applications, we can apply the artificial intelligence, machine learning, statistical techniques, mathematical modeling for enhancing all these. Now, aerospace application of advanced materials. Again, adaptive wings, aerospace applications are used for vibration damping, temperature resistant coating. Again, we have to conduct our study through data set and simulations. In healthcare innovation outcomes also, ML optimized hydrogels, personalized medicines are there. Again, for personalized medicines, whenever you visit any kind of medical practitioner, he'll be asking you n number of questions. So he's collecting the data from you so that he can provide you personalized medicine based on the history of the patient. Then biocompatible implants are there, faster regulatory approvals can be there. Then advancements in sustainable energy. Again, it highlights the benefits of sustainable energy and resilient infrastructure. Then self-sensing smart grids are there. ML guided photovoltaics are there. So all this is based on the energy systems. Now, data quality challenges also are there. If we are dealing with all this, the data quality should not be compromised. Whatever data sets we are using, they will give us the best possible results if we have the best quality data. So we need to keep a check on that also, how the data has been collected, how the techniques have been performed in order to come to the conclusion whether we are using synthetic data or it is the original data that is being used. Next, we have certain more techniques like black box, machine learning, explainable AI. So all these are also used for prediction of the various benefits which are related with the smart materials. Then overcoming simulation challenges. In advanced material, there are various challenges which we need to overcome. So all these challenges can be overcome by managing the time in the best possible manner, reducing the cost, and by applying the best possible techniques. Now, future trends in AI, ML integration, generative AI is there, digital twins. Part of this is it accelerates the entire material discovery process. Also, it bridges the gap lab to industry. That is, we are collecting data sets, conducting survey on that, and then we are coming to our conclusion. So we actually creating a bridge between the real and the artificial world. Quantum computing potential, that is quantum computing algorithms also are used for prediction of the smart materials. When enhancing materials and collaboration, there are various collaborative platforms. These are the various collaborative platforms related to material science which can be used. Now, ethical consideration. Now, this is the most important thing. Now, as the data in data science, data is concerned. We are collecting the data through survey. So that ethical concern is there. Whenever we are collecting the data, dealing with the data, privacy of the data has to be maintained. So those ethics should always be maintained while conducting any kind of analysis on the data. Finally, we come to the conclusion. Now, data science basically transforms smart material via machine learning, modeling, optimization techniques. Now, it enables faster, cheaper, and precise innovation. We do not have to waste much time. Cost also is reduced. Then, to action is we need to foster cross-disciplinary teams, that is, material scientists, data engineers. We all should work in a collaborative manner. Then only we can achieve all these goals. Then invest in open collaborations and sustainable practices. Now, the vision here is smart materials as pillars of resilient tech. So, we are basically focusing on all this. So, with this, we come to an end of this presentation. If anybody has any questions, any doubts, can ask. Yes.
that only we are using these techniques. We are focusing on the important composition or the important parameters. And we are trying to apply, let's say, machine learning algorithms or mathematical modeling in order to find out something new. So this is an innovative approach. We are studying the materials at the very, atomic level. The basic composition cannot be changed, but yes, we can combine it with some other material and then find out something new. Atomic structure. Yeah. So we are actually the atomic structure only. We cannot change the basic properties of the material, but yes, we can combine them and can come up with something. So this is a kind of innovative approach. Thank you. For that, we cannot identify the pH of the material. That is predetermined. No, no, no. I just mentioned that we know about the different each other, maybe the pH, temperature, atomic structure, that is already there, but we are applying our techniques like mathematical modeling or other techniques in order to, yes, exactly. This is a kind of innovative approach which we are trying to apply. This is a kind of incorporation of, yeah, a lot of work can be done in this domain. We focus properly on it, lot of work can be done, and we can come up with like new solutions in this domain that is related to smart materials. Okay, thank you so much. Hello, our chief guest, Kent MLA, Honorable Ashok Rohani ji have arrived in the hall, and we have just completed the first keynote address by Madam Anusha. We have come, she had come from a long way from Malaysia here and enriched the conference with her knowledge on the how data science is related to the smart materials. Thanks, madam. On behalf of organizing committee of the conference, I extend my thanks to you for your gracious presence. Thank you, ma'am. I request our session chair, Dr. Anubha Maheshwari, our convener, Dr. Kamal Kushwaha, sir, and our principal, sir, Dr. Rajiv Chandak, to please felicitate Dr. Anu with shawl Shrifal, a memento, and a certificate. I welcome you all once again on the occasion of inaugural ceremony of the International Conference on Novel Materials and Applications 2025 at our Jabalpur Engineering College. I would like to request our chief guest,
and all the dignitaries to please grace the stage with your presence. Now, I would like to request all the guests present on the dais to please start the Saraswati Pujan ceremony by lighting the lamp. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष 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 Thank you so much, guests. On the behalf of entire JC family, I would like to welcome all of you once again. Now, I would like to invite our principal sir, Dr. Rajiv Chandak, to please welcome our chief guest, Sri Ashok Rohani ji, MLA, Kant Jabalpur, with a token of gratitude. Thank you, sir. I would request Dr. Kamal Kushwaha sir to please welcome our principal sir, Dr. Rajiv Chandak, with a token of gratitude. I request Dr. Durgesh Nandini to please welcome our conference chair, Dr. Anubha Maheshwari, Professor Applied Chemistry and Dean Administration, with a token of gratitude.
Next, I would request Dr. Rajiv Chandak to please welcome Professor S.P. Gautam, President Mahakaushal Vigyan Parishad, Jabalpur. I request Dr. S.K. Mohabia to please welcome Dr. P.K. Jingge, Senior Professor, Mechanical Engineering Department. I request Professor Madhavi Soni to please welcome Dr. A.K. Sharma, Professor, Electrical Engineering Department, with the token of gratitude. I would like to invite Dr. Kamal Kushwaha to please welcome Mr. Ravi Kumar Verma, Senior Scientist from ISRO Ahmedabad, with a token of gratitude. Next, I would like to invite Professor Devanshi Soni to please welcome Dr. Anu Sayal, Senior Lecturer from Taylor's University, Malaysia. Now, I would like to request Dr. Kamal Kushwaha, convener of the conference, professor and head of Applied Physics Department, to please welcome Dr. Ajay Kushwaha, head of the Department of Metallurgical Engineering and Material Science from IIT Inaugural. Now, I would request Professor Devyani Soni to please welcome convener of the conference, Dr. Kamal Kushwaha, with the token of gratitude. I also welcome our dear audience who all are present over here and those who are joining today through online, through YouTube Live. Now, I would like to invite Dr. Kamal Kushwaha, convener, professor and head applied physics, to give a brief introduction for today's program. Good afternoon, everyone, and a warm welcome to the International Conference on Noble Materials and Applications. Being a convener, it's an honor to host you all today. I sincerely welcome to Honorable Chief Guest of Function, Sri Ashok Rohani ji, MLA Kent Vidhan Sabha Jabalpur. I welcome Professor S.P. Gautam sir, special guest, President of Mahakoshal Vigyan Parishad Vigyan Bharti. I welcome Dr. Anushayal ma'am, Senior Lecturer, Taylor University, Malaysia. Also welcome Mr. Ravi Kumar Verma, Space Scientist, ISRO, Ahmedabad. Also welcome Dr. Ajay Kushwaha, Professor, IIT Indore. I welcome Professor Rakesh Vajpayee, sir, HOD Physics, RTBB Jabalpur. I welcome all the dignitaries on the dais, Honorable Principal, sir, Rajiv Chandak, Conference Chair, Anubha Vaishnavi ma'am, Dr. P.K. Jingge, sir, Vice Principal, sir, A.K. Sharma, sir, and sincere welcome all participants teachers over here. This conference will bring together experts from academia, industry, and research institutions to share knowledge, ideas, and innovation in the field of noble materials. Over the next 2 days, we will go through the latest advancements, challenges, and opportunities in this exciting field. Around 250 participants have done pre-registration for this conference. Out of these 250 participants, 110 research papers have been selected for the presentation in the different sessions.
around 75,000 rupees have been deposited in the college official account till date by the participant. Today, we have a keynote lecture of Dr. Anushal ma'am, senior lecturer, Talon University, Malaysia. Then we have a very informative talk by Honorable Professor Sanjay Kumar Tiwari sir, Vice Chancellor, Oj University, Bhopal. Now, after that, Senior Scientist ISRO Ahmedabad, Mr. Ravi Kumar Verma will deliver a talk on materials being used in space technology. Similar, Similarly, tomorrow there are very informative talks by Dr. Ajay Kushwaha, IIT Indore, Dr. Alok Shukla, NIT Mizoram, and by Professor Latifa, Editor Chemistry Agriculture. Together with this, around 100 plus posters with oral presentations by the participants will be held in four different sessions. The sessions are material and technology, nanotechnology, sustainable energy and technology, emerging smart technology. All registered participants will get certificate and best paper presentation will also be awarded for each school. Participants attend all sessions sincerely. आज के समय में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास ऊर्जा के सीमित संसाधन हैं। इसलिए ऊर्जा कुशल उपकरणों की आवश्यकता है जो कम ऊर्जा की खपत करे और अधिक से अधिक कार्य में दक्ष हो। ग्लोबल मटेरियल्स पर शोध करने से हमें एनर्जी इफिशिएंट डिवाइस बनाने में मदद मिलेगी और हमारी ऊर्जा की मांग को पूरा करने में सक्षमता प्राप्त होगी। तो मैं समस्त गणमान्य जन, समस्त शिक्षकों को, समस्त जो विद्यार्थी हैं उनका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। Thank you. Next, we have a special video message from Professor Latifa Latif from University of Tunis Al Manar and editor of Printed Journal. Africa. Let's play the video message. Thank you. Good morning. Yes, colleagues and fellow research. I'm Lachita, professor at the University of Tunisia. I'm honored and privileged to be here at the International Program on Noble Materials and Applications 2025. I'm really delighted to join this esteemed gathering of brilliant minds from around the world, united by the shared passion for innovation and advancement in material science and application. Conference was significant and exciting cutting-edge ideas, foster collaboration, explore transformative digital global materials, and all shape here and potentially shape the future of science and improving life forward. I'm pleased to present my work as a research, and I look forward to engaging with you all during this event. I extend my heartfelt gratitude to the organizer for their efforts in bringing us together. Special thanks to Dr. Kamel for his education and vision in making this conference a reality. Wishing all participants inspired and by this event and the way for groundbreaking discoveries and meaningful collaboration. Thank you and wish you all a successful conference. Thank you, Professor Latifa, for your good wishes. Now we have a video from Dr. Kishore Kumar Sadasivan from Qatar University. This video. Good morning, distinguished guests, esteemed colleagues, and fellow researchers. I'm Dr. Kumar Sadashivani from Qatar University, Qatar, and it is a profound honor to be a part of international conference on novel materials and applications organized by the Department of Applied Physics, Jabalpur Engineering College, Jabalpur. It is truly a pleasure to join this esteemed assembly where leading minds from across the globe
converged, driven by a common passion for innovation and advancements in material science and its applications. This conference served as a vital platform for exchanging groundbreaking ideas, fostering collaboration, and exploring transformative innovations in novel materials. The knowledge and research shared here hold the power to shape the future of science and technology, influencing industries and enhancing lives worldwide. I would like to express my sincere appreciation to the organizers for their remarkable efforts in bringing us together. A special acknowledgement goes to Dr. Kamal Kumar Kushwa. He is a professor, head applied physics, for his unwavering commitment and vision in making this conference a reality. Over the past 4 years, our collaboration has been highly fruitful, leading to numerous publications. Additionally, we have jointly applied for research grant funding, and we remain optimistic about the success of our proposals. Wishing all participants a rewarding and insightful experience. May this event pave the way for pioneering discoveries. Wishing everyone good luck. Thank you, Dr. Sadasivan, for your good wishes. Now, next we have a video message from Dr. Purnima Kare, Director, School of Nanotechnology, IIT. Hello everyone, honorable guests, distinguished scientists, researchers and esteemed colleagues. It is an absolute honor to reach out there for the esteemed conference on novel materials and applications. As we gather here, we are united by a shared passion for scientific innovation and the pursuit of advanced materials potential to revolutionize industries, transform society, and improve the quality of life across the globe. Materials science has always played a crucial role in the shaping human civilization. From the discovery of metals to the development of semiconductors and nanomaterials, every breakthrough has led to significant technological and economic progress. Today, we find ourselves at the forefront of a new era defined by materials engineered at the atomic and molecular levels to exhibit unprecedented properties and functionalities. The scalability of novel materials, cost effectiveness, and environmental impact must be carefully addressed to ensure their practical and ethical implications. Collaborative efforts between academia, industry, and policymakers are essential to bridge the gap between research and real world applications. The future is driven by materials innovation. As we move forward, interdisciplinary research, computational modeling, and artificial intelligence will further accelerate materials discovery and development. The fusion of physics, chemistry, biology, and engineering will lead to solutions that were once deemed impossible. It is through conferences like this that we can exchange ideas, foster collaborations, and inspire the next generation of materials scientists and engineers. In closing, I extend my deepest gratitude to the organizers, fellow researchers, and all the participants for making this event a platform for knowledge sharing and innovation. Let us continue to push the boundaries of material science, explore new frontiers, and strive for advancements that will benefit humanity for generations to come. Thank you, and I wish you all a productive and inspiring conference. A good luck to all of you. Thank you. Thank you, Dr. Purnima Swaroop, ma'am, for your good wishes. Now, next, we have a message from Dr. Sanjay Tiwari, Honorable Vice Chancellor of MD University. Let's read the message.
Namaste and a very warm welcome to all the honorable guests, researchers, scientists, academicians, industry experts, and participants joining this event from across the globe. It is both an honor and a pleasure to interact with you at the inaugural function of this international conference on novel materials and applications. Today, we gather at a time when the frontiers of science and technology are expanding at an unprecedented pace, and novel materials are at the heart of this revolution. Our world is undergoing rapid transformations and innovations in novel materials and enabling breakthroughs in the fields as energy, healthcare, electronics, and environmental sustainability. These materials not only open up new realms of possibility in research and industry, but also offer tangible solutions to many of the challenges we face today. Government of India is focused on its important objective of building the overall semiconductor ecosystem. The result of vision of Atmanirbhar Bharat in electronics and semiconductor materials is India's semiconductor mission for the development of semiconductor materials and display manufacturing ecosystem in our country, aimed at positioning India as a global semiconductor materials manufacturing hub. This mission transcends more economic growth, increasing national security and technological sovereignty and the future of India's digital economy. The India Semiconductor Mission and India Quantum Mission both are related to the theme of this conference. So this conference is not only a celebration of cutting edge research, but also an invitation to collaborate, share insights, and explore new ideas. I am confident that discussions, presentations, and interactions over the coming days will inspire creative solutions and foster enduring partnership among the researchers, scientists, academicians, and industry professionals and pave the way for a brighter, more sustainable future. Let us embrace this opportunity to learn from one another, challenge the conventional boundaries, and drive innovation that will shape a better future for our communities and the world at large. I would like to take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to Professor Kamal Kushwaha, who is convener of this international conference, Dr. Rajiv Chandak, principal of this prestigious JEC, and his dedicated team, whose relentless hard work and meticulous planning have been instrumental in shaping this platform for scholarly exchange and innovation. Thank you for your dedication, passion, and commitment to advancing this exciting field. I wish you all a successful and inspiring conference. Thank you very much. Thank you, Dr. Sanjay, for your valuable thoughts and good wishes. Next, I would like to request all the guests present on the stage to please unveil the book of conference proceedings. Thank you so much, everyone. अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे यशस्वी विधायक महोदय श्री अशोक रोहानी जी कि वो यहाँ पर आए और हमारे श्रोताओं गण को संबोधित करें।
हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक ईश्वरदास जी रोहाणी, विधायक कैंट, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहूंगा और उनसे क्षमा भी चाहूंगा कि हमने उनको बहुत लेट अप्रोच किया, लेकिन एज यूजुअल हम उनको अपने परिवार का सदस्य ही समझते हैं। और कल जबकि नर्मदा जयंती थी और वो बहुत व्यस्त उनके कार्यक्रम थे, उसके बाद भी उन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया। बहुत कम समय के उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा और आपका आमंत्रण स्वीकार करता हूं, और बकायदा बिल्कुल जो उन्होंने समय दिया था डॉट उस समय पर हमारे बीच उपस्थित हुए। तो ऐसे यशस्वी विधायक श्री अशोक ईश्वरदास जी रोहाणी जी के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी से चाहता हूं एक बार जोर से ताली बजाएं। उनका समय बहुत कीमती है, उस कीमती समय से कुछ समय निकाल के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और मैं अब उनको इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए उनको आमंत्रित करता हूं कि हमको जो है 2 शब्द हमारे लिए ब्लेसिंग के लिए कहें। बोलिए भारत माता की। प्राचार्य महोदय, जब मैं परिवार का हूं तो फिर आमंत्रण की क्या आवश्यकता है, और समय की कीमत अगर सीखना हो तो इन्हें हमारे युवाओं से सीखना चाहिए। अगर 11 बजे आपने बुलाया और मैं नहीं आ सकता तो मैंने 12 बजे का समय दिया, और उस 1 घंटे में भी आपने उसका उपयोग किया और उसको कॉन्फ्रेंस को आपने चालू किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्राचार्य डॉक्टर राजीव टांडक जी, डॉक्टर SP गौतम जी, महाकौशल विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर कमल कुशवाहा जी, अहमदाबाद से पधारे डॉक्टर रवि वर्मा जी, इस कार्यक्रम की प्रभारी अनुभव महेश्वरी जी, AK शर्मा जी, PK झिंगे जी, मलेशिया से पधारी प्रोफेसर अनुस्वाल जी, प्रोफेसर अजय कुशवाहा जी, और मेरे सभी टीचर्स और युवा साथियों। बहुत तेज गति से समय भागने वाला है, इसमें तो जो अपडेट रहेगा वही कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज की यह कॉन्फ्रेंस आपको जो एक अवसर मिला है, उस अवसर का जो आप लाभ ले रहे हैं वो आपके कैरियर में बहुत काम आएगा आपको। इस समय जिसने अपने समय की कीमत नहीं समझी और इस तेज गति से भागते हुए समय में जो अपडेट नहीं रहा, वो पिछड़ जाएगा। डिग्री मिल जाएगी आपको, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। आप कल्पना करिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 के भारत की कल्पना के लिए शुरुआत अभी कर रहे हैं, और उसकी नींव के पत्थर आप हैं। वो जो इमारत जब खड़ी होगी, जो भारत सपना विकसित भारत का होगा, उसमें अगर कहीं बात लिखी जाएगी तो उसके नींव के पत्थर आप रहेंगे। वो जो महल खड़ा होगा, वो जो सपना साकार होगा, आप उसके लिए अभी से ही प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने एक अवसर को पकड़ा, झपटा, और इस अवसर से जो आपको लाभ मिलेगा वो आने वाले समय में आपको बहुत काम आएगा। और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज वास्तव में अपने आप में एक महत्व का कॉलेज है, जिसकी पूरे देश में चर्चा होती है, और यहाँ से जो पढ़कर आगे बढ़ते हैं वो निश्चित रूप से ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। लेकिन आप हमेशा परिश्रम के साथ साथ अपडेट रहें। अभी संचालक जो कर रही थी, उनने मेरे नाम के आगे पहले पिता का नाम लिया। मुझे गर्व होता है कि जब मेरे नाम के आगे पिता का नाम लिया था, और आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि अपने माता पिता का नाम आप आगे रोशन करें और इसी तरह आगे बढ़ें और देश का नाम आगे बढ़ाएं आप। और ये उम्र जो होती है, ये वास्तव में जिसने इस उम्र में परिश्रम कर लिया और नए नए आइडियाज का यह अवसर है, और मैं इस बात को मानता हूं कि ईश्वर ने हर किसी को कुछ न कुछ प्रतिभा दी है। जरूरत है उसको पहचानने की, निखारने की, और यही अवसर है उस प्रतिभा को पहचानने का, निखारने का। सचेत रहें, चारों तरफ आंख नाक कान खुले रखकर
आप इसी तरह पढ़ाई करने का जो अवसर आपको मिला है, डिग्रियां बहुत लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन जिसके पास हुनर होता है, जिसके पास आइडिया होता है, वो ही आगे बढ़ता है। इसलिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और परिवार के सदस्य के रूप में ही हमेशा मैं आपके साथ हूं। कभी मेरे लायक कभी आप, हालांकि अलग अलग अंचलों से आए हुए हैं, लेकिन मेरा आपसे कोई मतदाता और उसका नाता नहीं है, लेकिन एक परिवार के सदस्य के रूप में आपसे हमारा नाता है। इसलिए मेरे इस छोटे से सेवक को कभी आपको किसी की आवश्यकता पड़े, मैं अगर किसी के काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। I would request our principal sir, Dr. Rajiv Chandak, to please felicitate our chief guest with a shawl, shriffle, and a memento. Moving ahead, I would like to invite Mr. Ravi Kumar Verma, Senior Space Scientist from ISRO Ahmedabad, to share his thoughts. चलिए सेटल हो जाइए आराम से, है ना। आपके एमएलए साहब भी चले गए अब तो। जबलपुर में आओ और अगर नहीं बोलो एक बार ना नर्मदे हर, तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो शैल वी स्टार्ट फ्रॉम नर्मदे हर। सो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक्चुअली क्या है, एमपी की बोलते हैं ना कल्चरल सिटी, या जिसको बोलते हैं ना संस्कार क्षेत्र से, मतलब एमपी की सबसे बढ़िया हेरिटेज और हेरिटेज या बोल के सांस्कृतिक सिटी में आया हूं आज। तो सबसे पहले तो आई एम इंडीड प्लेजर एंड ऑनर कि टू बी ए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं आज जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हूं, जो कि सेंट्रल इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, राइट। सो मेरे लिए एक्चुअली बहुत गर्व की बात है कि मैं आज जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में नोवल मटेरियल्स एंड एप्लीकेशन ICNMA 2025 में आ रहा हूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड प्लेजर एंड ऑनर, मतलब बोलना चाहिए बॉटम ऑफ हार्ट, या नीचे से अगर बोले तो लीवर, उसके नीचे जो भी आता है ना किडनी, वहां भी अगर आप ऐड कर लो ना, सो आई विल थैंक्स टू द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कि उन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया। और बहुत बहुत थैंक्स कि क्या बोलना चाहिए कि कल एक्चुअली नर्मदा जी का वो भी था ना, प्रकाटित है। सो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि मैं एकदम सही टाइम पे आया कल, और जो माइथोलॉजिकल मतलब हेरिटेज के साथ साथ जो माइथोलॉजिकल कल मैंने यहाँ पे देखी है, सो मेरा भी मतलब नर्मदा जी से वो ज्यादा अफेक्शन अब बढ़ गया है, राइट। तो शेला स्पीक इन हिंदी ओके ना आप सभी के लिए, और शेला गो फिर इंग्लिश, ठीक है, बढ़िया, मातृभाषा अच्छी होती है, राइट। और ऐसा मतलब तुम्हारे विश्वास के शब्दों में अगर मैं बोलूं कि शायद हिंदी वो भाषा है जो एक्चुअली 52 अक्षरों में शुरू होती है
और अनपढ़ से लेकर अगर ज्ञानी तक लेके जाती कोई भाषा है तो शायद वो एक ही भाषा है। सो बिफोर जिसके लिए मुझे बुलाया गया एक्चुअली जिस पर्पस के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली आई शुड थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने इतनी बढ़िया एक जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक इतनी बढ़िया कॉन्फ्रेंस इनिशिएट करी है। एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दैट कि मटेरियल इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल सिंस फॉर इंसेप्शन ऑफ सिविलाइजेशन, राइट। अगर हम बात करें सिविलाइजेशन का तो हम हमेशा बात करते हैं मिस्र वाली सभ्यता, है ना, इंडस वाली सिविलाइजेशन या बोलना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन आप एक बार और देखेंगे कि अगर बाइफर्केशन मटेरियल्स पे भी हुआ है, कास्ट युगीन सभ्यता, है ना, लोह आए मतलब लोह वाली आए सभ्यता, हम आए ब्रॉन्ज एज, है ना, फिर हम नेक्स्ट आते हैं जो नेक्स्ट शुरुआत होती है इंटेलिजेंट मटेरियल्स की सभ्यता। मतलब अगर आप देखें तो जिस सभ्यता का बाइफर्केशन है, वर्गीकरण भी अगर मटेरियल्स पे किया जाए तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस होता है मटेरियल का। राइट नाउ वी आर इन द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मटेरियल साइंस, और ये अगर आज के देखें ना, आज के समय में सबसे ज्यादा बोलना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस का, मुझे लग रहा है कि जो टॉपिक चूज किया गया है बड़ा ही सिलेक्टिव और बहुत ही बोलना चाहिए बच्चों के लिए या नई जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। क्योंकि अनटिल अनलेस यू डोंट नो मटेरियल के बारे में अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप बेस्ट जो उससे आउटपुट निकलने वाला है ना उसके बारे में आप कभी जान नहीं पाएंगे। सो जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, राइट सिलेक्शन ऑफ राइट मटेरियल इज एक्चुअली आपकी हाफ डन, मतलब 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, राइट। तो इसीलिए चूंकि सभ्यता का उद्भव भी मटेरियल से हुआ है तो मुझे लग रहा है आज के टाइम जो ये कॉन्फ्रेंस है इसका जो सब्जेक्ट या टॉपिक है कॉन्फ्रेंस के लिए जो सिलेक्टिव टॉपिक लिया है बहुत ही रिलेवेंट है आज के तारतम्य के हिसाब से और इस प्रोग्राम के हिसाब से। और जैसे कि पहला ही लेक्चर शुरुआत हुआ है प्रोफेसर फ्रॉम मलेशिया, है ना, she has emphasized so many new materials especially shape memory alloy, right, SMM, phase change material, PCMs, या बोलना चाहिए new category of material like smart materials, right, functional graded materials. Then since we are also working from, मतलब हम भी इसी चीज में काम कर रहे हैं तो लंच के बाद ऐसे भी लेक्चर देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। So I request each and everyone कि जब मेरा लेक्चर हो तो I will touch upon the application of smart material or novel materials on space science and technology, how these are the material is going to, I can say, inhale the space science and technology or the new latest generation of space science and technology. We are going to use such kind of these materials. So none other than, since this institute started in 1947, जब देश को आजादी मिली तब से इस इंस्टीट्यूशन का भी उद्भव हुआ, स्टार्ट हुआ है। तो जिस तरह देश अपना अमृत काल अभी सेलिब्रेट कर चुका है उसी तरह आपका कॉलेज भी जीसी जबलपुर भी अमृत काल सेलिब्रेट कर चुका है। तो कुडोस टू ऑल दोज हु आर वर्किंग हियर, है ना, स्पेशली फॉर ऑल फैकल्टी, ऑल टीचर्स, ऑल एचओडी, ऑल डिपार्टमेंट्स, एंड आई विश अ ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोस रिसर्चर्स जो अपने पेपर पोस्टर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एंड आई होप कि वो यहाँ से कुछ मीनिंगफुल चीजें निकल के आएगी इस कॉन्फ्रेंस से। एंड आई स्पेशली थैंक्स क्योंकि दूसरे दोनों ये मोड में हो रहा है, फिजिकल तो ही रहा है साथ में हाइब्रिड भी। सो दोज हु आर ज्वाइनिंग थ्रू YouTube mode or maybe hybrid mode, I welcome to all and greetings to all of them also कि whatever the things has to come out from this conference is actually going to utilize for our next generation of budding engineers or scientists, those who are coming, those who are attending this conference. And from this platform actually I want to thanks to Dr. Chandak sir, principal of GEC Jabalpur. Thank you sir, आपने मुझे invite किया. Same time I thanks to Dr. Kamal Kumar Kushwaha ji and Mahodaya ji, Department of Applied Physics, they have invited me, and hopefully this conference will fulfill the best of luck for this conference, and the same time all the best for all the participants for this for next 2 days conference. So thank you each and all. थैंक यू रवि सर। हमारे बीच डॉक्टर राकेश वाजपेयी सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय फिजिक्स उपस्थित है। मैं सर को निवेदन करता हूं कि सर डायस पे आए और जोरदार तालियां विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख के लिए। I request our principal sir, Dr. Rajiv Chandak, to please welcome Dr. Rakesh Bajpai with the token of gratitude.
Thank you, sir. Next, I would like to invite Dr. Ajay Kushwaha, Head of the Department of Metallurgical Engineering and Material Science from IIT Indore, to share his thoughts. Namaste. Honorable guest on the dais, of the dais, delegates and participants. I'm thankful to the principal of this college, also the organizing team for your kind invitation. I think Ravi has already set the tone. Let me continue with that. We know what is the material. So we often said that everything other than the spiritual, we call the material. But what we think about the advanced material or the novel material, it's basically leading toward the cutting edge applications. So when we add the applications, it's become the novel or the advanced. Right, and a material scientist, being a material scientist, we always look forward to develop the new functionalities or maybe the new application in a material. But here I would like to communicate the 2 points as I have given 2 minutes. The point one is, when we think about a new material or new technologies, I would request everyone, please consider our national needs, okay, the country requirement. And I think our earlier speaker already given the idea about our national missions. You must be aware about our national semiconductor mission. You must be aware about the quantum mission of India. You also aware about the green hydrogen mission. Hopefully you are aware about the technical textile mission. So we need to think about these requirements and we should align our research. The point number 2 I would like to convey here, which include me also, let's think about working such materials which can create the smarter world with the emphasis that a sustainable and green future. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Now, I would request Dr. Rakesh Bajpai to please share his thoughts. Thank you very much for inviting me on this gracious occasion of the event being organized in this very reputed institute of not only India but abroad as well. मुझे यहाँ आने के बाद वस्तुतः मेरा बचपन जो है इसी परिसर में बीता है। मेरे पिताजी यहाँ एज फैकल्टी थे अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो इस नाते मेरा इस महाविद्यालय के विकास से मेरे बचपन काल से ही मेरा जुड़ाव रहा है। तो आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे इसी महाविद्यालय में इस डायस के माध्यम से आपके सम्मुख अपनी बात रखने का अवसर मिला। मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथिगण, मंचोन्मुख सभी विद्वज्जन जो आज इस महाविद्यालय के अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय जो पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में जो नोवेल मटेरियल्स की जो बात की जा रही है और उनके अनुप्रयोगों अथवा उनकी एप्लीकेशंस पर जो चर्चा हो रही है, उसके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को और सम्मानीय प्राचार्य महोदय के माध्यम से इस पूरे महाविद्यालय को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी को आयोजित करने का यहाँ पर संकल्प लिया। जहाँ तक पदार्थ विज्ञान का ताल्लुक है, जैसा कि प्रोफेसर वर्मा जी ने अपने उद्बोधन में इंगित किया कि पदार्थ जब हम सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक
स्तर पर युगों की व्याख्या करते हैं तो हम पदार्थ के माध्यम से भी अपने युगों की व्याख्या करते हैं। उन्होंने तमाम युगों की बात की और आज के वर्तमान युग में जो इन पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं उसकी व्याख्या की। तो निश्चित तौर पर पदार्थ विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है और साथ ही जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारा पदार्थ के उपयोग और जिन पदार्थों पर हमें गर्व होता है उनकी के अध्ययन के क्षेत्र के लिए भी संभवतः यह संगोष्ठी कहीं ना कहीं हमको प्रेरित करेगी और हमको नए जो पदार्थ आ रहे हैं उनके अनुप्रयोगों की ओर हमें एक दिशा प्रदान करेगी। पदार्थ विज्ञान का एक जो मोटिव होता है, हम जब पदार्थ विज्ञान का इंट्रोडक्शन विद्यार्थियों को करते हैं तो हम उसमें स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी की इंटर रिलेशनशिप की बात करते हैं और कहीं ना कहीं उसके आधार पर हम उसके डिवाइस एप्लीकेशन या उसके अनुप्रयोग की बात करते हैं। तो इसी तरीके से पदार्थ विज्ञान का जो क्षेत्र है वह हमें अवसर प्रदान करता है कि हम खाली अपने विषय पर में संकुचित न रहें, हम अंतर विषय की ओर भी आगे बढ़ें, जहां पर भौतिकी भी हो, रसायन भी हो, जीव विज्ञान भी हो, गणित भी हो, संगणक विज्ञान भी हो और साथ पदार्थ विज्ञान का उद्भव होता है, उसका प्रादुर्भाव होता है। तो निश्चित तौर पर यह इन सब के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, और आज ये अवसर है कि इन सब से संबंधित यहाँ वैज्ञानिक इकट्ठा है, तो निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से इस संगोष्ठी के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आभार। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. Now, I would like to request Dr. A.K. Sharma, sir, to please say a few words. Respected Principal Sir, Jhinge Sir, Bajpayee Sir, Gautam Sir, and dignitaries on the dais, all the faculty members, dear students. As this topic of the international conference, that is novel materials and applications, it is very much essential in present conditions. जैसा कि हम जानते हैं ये टेक्नोलॉजी का युग है और अगले आने वाले 25 साल ये भारत के साल हैं। हमको यदि विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, जो डिक्लेयर किया जा चुका है, उसके लिए जरूरी है कि जिन जिन मटेरियल्स की हमारे पास कमी है, जिन जिन मटेरियल के टेक्नोलॉजी की कमी है, वो हम भारत में विकसित करें और उन पे काम करें, रिसर्च करें और इकोनॉमिकली भारत में उनको बनाने की कोशिश करें। मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में CRGO जो मैग्नेटिक मटेरियल है, टनों में यूज होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है CRGO, उसके बगैर नहीं बनता है। और आज तक हम A ग्रेड का CRGO नहीं बना पाए हैं। हम डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज के। टनों में हम CRGO बाहर से मंगाते हैं और A क्लास का जो आयरन ओर है वो हमारे पास है। बेलाडीला, उड़ीसा का जो बहुत बड़ा आयरन ओर का खदान है, वहां से वर्ल्ड का सबसे अच्छा ओर निकलता है, आयरन ओर, पर वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इनटू CRGO, गुड क्वालिटी CRGO। जो लॉसेस हैं, नो लोड लॉसेस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, वो डिपेंड करते हैं इस CRGO की क्वालिटी पे। CRGO की क्वालिटी A, B, C, D, E, F
तक डिफाइन की गई है। जितने ज्यादा लॉसेज उतना कैटेगरी उसकी नीचे चली जाती है, जितने कम लॉसेज उतने ऊपर चली जाती है। एक अच्छे क्वालिटी के सीआरजीओ की हमको जरूरत होती है, तो निश्चित ही उसको नोबल मटेरियल माने या ना माने, पर उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है और हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में उसको यूज किया जाता है। लॉसेज रिड्यूस होते जाते हैं और लॉसेज का रिड्यूस होना माने एनर्जी की सेविंग। सिमिलरली एक कंडक्टर यूज किया जाता था ट्रांसमिशन लाइन में, दैट इज ACSR कंडक्टर। एल्यूमिनियम का कोर होता था, बीच में एक स्टील का वायर होता था। स्टील का वायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता था और एल्यूमिनियम वायर से करंट फ्लो होता था। एक नया मटेरियल आ गया, हमने डेवलप भी कर लिया, ट्रिपल ए कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय। और यदि हम कंपेयर करें तो ACSR के बराबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसकी, और लॉसेज जो हैं करीब करीब 10% कम हो गए। तो ऐसे मटेरियल हम बना रहे हैं, बनाना चाहिए, और निश्चित तौर पे ये कॉन्फ्रेंस जो है उसमें एक अच्छा योगदान देगी। आने वाले समय में मटेरियल साइंस का जमाना आने वाला है। फोटोवोल्टाइक सेल मटेरियल नहीं है हमारे पास, बैटरी जो स्टोरेज के लिए बैटरी चाहिए, उसमें जो मटेरियल लिथियम आयन मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, इट इज वेरी कॉस्टली। उसका सब्सटेंशियल जो यूज करने वाले हैं सोडियम आयन मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो इस टाइप के बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, और इन मटेरियल्स पे यदि रिसर्च हो तो निश्चित तौर पे 2047 तक हम विकसित राष्ट्र के रूप में इस वर्ल्ड में आ जाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. Next, I would like to invite Dr. Anubha Maheshwari, Madam, to say a few words. Respected Principal Sir, Dr. Rajiv Chandak, eminent speakers and scientists present on the dais, SP Gautam Sir, Dr. Rakesh Bajpayee Sir, Ajay Kushwaha Ji, Ravi Verma Ji, Anu Shayal Ji, former principals, respected Dr. P.K. Jinghe Sir, Dr. A.K. Sharma Sir. First, I congratulate, and Kamal Kushwaha Sir, I congratulate the convener of this international conference, Dr. Kamal Kushwaha, Professor and Head Applied Physics, as well as the entire physics department for organizing this mega event of international conference here, in which is going to provide an original and unique environment for researchers in academia and industry to share and discuss their cutting-edge results on the physical and applied chemistry of novel materials. In these 2 days, research papers on the characterization and applications of novel materials such as ionic liquids, ferroelectric materials, nanocatalyst, nanomaterials, nanocomposite membrane plasma technology, hybrid organic and inorganic sensors, biodegradable polymers, novel heat transfer fluids, and many more will be presented. As we know that the demand of the novel material is skyrocketed in various industries, especially these are being extensively used in energy storage devices nowadays, aerospace, space technology, fine chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals, biotechnology, and in automobile industries. Such materials, because they are climate friendly, thus they can provide sustainable development for the future process industries. There has been a surge of extensive research and development in this sector, and in this regard, this particular conference will be a unique contribution pertinent to this domain. I wish this conference a grand success. Thank you. Thank you, Madam. Next, I would like to invite Dr. P.K. Jinghe to share his thoughts. आज के कार्यक्रम में मंचासीन
समस्त सम्मानीय अतिथिगण, सभागार में उपस्थित शिक्षक एवं छात्र छात्राओं, अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट द्वारा 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं पूरे फिजिक्स डिपार्टमेंट को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जिस विषय का चुनाव उन्होंने किया है वह बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट्स जो वर्ल्ड लेवल पे हो रहे हैं, उस विषय को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स इंजीनियरिंग फील्ड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम कितनी भी अच्छी डिजाइन करें, यदि कॉम्पेटेबल मटेरियल का चुनाव या कॉम्पेटेबल मटेरियल हमें नहीं मिला तो हम जो डिजाइन लगाएंगे वह फेल हो जाएगी। ये जो 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारे पास बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। मैं समस्त छात्र छात्राओं और शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि ये इसका लाभ उठाएं और जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स के संबंध में नई जानकारियां इन 2 दिवस में हमको प्राप्त होंगी, इससे निश्चित रूप से हमारे शिक्षकों एवं छात्रों को, जो हमारे छात्र रिसर्च में शामिल हैं, उन्हें लाभ प्राप्त होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. We have our special guest, Professor S.P. Gautam. He is the president of Vigyan Bharati Parishad, Jabalpur. I would invite him to share his valuable thoughts. धन्यवाद। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया, मैं विज्ञान भारती के प्रांतीय अध्यक्ष के नाते आपके सम्मुख खड़ा हूं। ससम्मान मंच और समुपस्थित सज्जन वृंद और मातृशक्ति, वेदांत में बहुत अच्छी बात कही है, बहुत समय नहीं लूंगा, समय तय है। वेदांत में कहा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मटेरियल शुरू कहां से होता है? एनर्जी से। एनर्जी की बहुत बात हम करते हैं। एक पंक्ति में कहा है मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। मीन्स फ्रॉम द सिंगल एनर्जी the whole world has been constituted, created. Mama Maya. Maya is continuous chemical reaction in want of energy itself. That is how the world is formed. तो मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। जितना लिविंग वर्ल्ड है और जितना नॉन लिविंग वर्ल्ड है, यह सब केवल उसी मैनिफेस्टेशन का, उसी एनर्जी के मैनिफेस्टेशन के 3 गुणों का परिणाम है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। Not to go in detail, I am just going to touch upon what should be thought and worked on the Indian spiritual science. सब लोग सुनते हैं सठ सुधरहि सतसंगत पाई पारस परस कुधातु सुहाई। हर शब्द महत्वपूर्ण है। सठ क्या है? जड़, नॉन लिविंग। सुधरहि सतसंगत पाई, सत क्या है? हमने कहा एनर्जी। तो यदि यह एनर्जी नॉन लिविंग में जाती है, सठ सुधरहि सतसंगत पाई, तो वो भी मोबिलाइज हो जाता है। मीन्स इट चेंजेस द प्रॉपर्टीज। पारस परस कुधात सुहाई, इसमें जोर देने की बात है। हम मटेरियल की बात करते हैं। पारस वह स्टिमुलाई है जिसके कारण लोहा सोना बन जाता है। पारस परस कुधातु सुहाई। यहां हमने कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की, चौपाई गाई और ठंडे बस्ते में डाल दिया। We never thought of how the photon gets converted to proton and electron, and if the protons are reduced, the size of the atom will be reduced and it would be transformed into the different elements. तो जो एलिमेंट्स, जो तत्व हैं, उनको बनाने पर हमने कोई काम नहीं किया। हम बहुत बार एलॉयज की बात कर रहे हैं, बहुत बार ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे। और आप एक लाइन देखें जो मैंने कहा, मम माया संभव संसारा जीव चराचर। जितने तरह के जीव हैं,
ये सब उसी एनर्जी से बने हैं। और एक बैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिज्म को अपने जीवन में 4000 रास्ते तय करता है। कितने नए मटेरियल्स आ रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है, अलॉय बनाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। That rich the nature is, so we have to explore, we have to think। और जो हमारा आध्यात्मिक वैज्ञानिक ज्ञान है, उस तत्व को एनर्जी के मैनिफेस्टेशन से यदि शुरू करेंगे तो शायद आप सभी इस देश को कम पैसे में भी बहुत अच्छा लेक्चर दिया अनु जी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये समय की बचत होती, पैसे की बचत होती है, उससे भी बड़ी बचत होगी यदि हम ये नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है एक्सकेवेट कर पाए और प्रकृति के नजदीक आ पाए, तो बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखेंगे। एनीवेज, टू कट द स्टोरी इन शॉर्ट, निश्चित मेरा आप सबसे आग्रह है कि भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान को गंभीरता से लैब्स में लेकर जाएं। इनको घंटी बजाने वाले पंडितों के द्वार तक नहीं छोड़ें। इनमें बहुत गंभीर चीजें हैं, हमारा पैसा और धन दोनों बचेगा। तो यदि आप सब ऐसा करेंगे, और जितना फैला हुआ प्रकृति का है, प्रकृति का मतलब ही है पंच तत्व, जो पंच महाभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा वायु पृथ्वी आकाश, ये सब इनसे जो बनता है, जो कृति है, वही प्रकृति है। माया इल्यूजन है, कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन। प्रपंच कहते हैं माया का प्रपंच, पंच का प्रकटीकरण। तो जब इंडिविजुअली आप इनको पढ़ेंगे तो शायद आपको मटेरियल भी नए मिलेंगे और आपको मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगी। तो माया का प्रपंच प्रकृति, इस दृष्टि से यदि आप ध्यान देंगे मटेरियल साइंस के लिए, तो मेरे ख्याल से ये हमारे ऊपर भी उपकार होगा कि हम आज आए, आपके सम्मुख अपना निवेदन रखा। और मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं कि बिना इस पदार्थ ज्ञान के जाने आपके सम्मुख खड़े करने की इन्होंने धृष्टता की, और मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। पुनः अनुरोध करूंगा कि कुछ पढ़ें भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान को भी। धन्यवाद। Thank you, sir. Now, I would request Dr. Rajiv Chandak, Principal, sir, Dr. Kamal Kushwaha, sir, Convener of the conference, and Dr. S.K. Mahobia, Co-Convener of the conference, to please felicitate Shri S.P. Gautam ji with a shawl, Shrifal, and a memento. Again, I would request you, sir, to please felicitate Dr. Rakesh Bajpai with a shawl, Shrifal, and a memento. Now, I will invite Dr. Rajiv Chandak, Principal, sir, to share his valuable thoughts. मंचासीन प्रांतीय अध्यक्ष विज्ञान भारती डॉक्टर एसपी गौतम सर, डॉक्टर राकेश बाजपेयी सर, एचओडी फिजिक्स आरडीवीवी जबलपुर, डॉक्टर अनु सयाल मैडम, प्रोफेसर टेलर यूनिवर्सिटी मलेशिया,
Dr. Ajay Kushwaha ji, Professor from IIT Indore, Professor Ravi Verma ji, Senior Scientist, ISRO from Ahmedabad, Purv Pracharya, Dr. P.K. Jhinge sir, Dr. A.K. Sharma sir, HOD Chemistry, Dr. Anubha Maheshwari, और इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक डॉक्टर कमल कुशवाहा, HOD Physics, faculty members, students, dear students, and guests, आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर कमल कुशवाहा और ऑर्गेनाइजिंग टीम, उनकी जो फिजिक्स डिपार्टमेंट की है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को इतने अच्छे ढंग से आयोजित करने के लिए। और आगे भी जो लेक्चर्स होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक होंगे। उन्होंने, जैसा सभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक नॉवेल मटेरियल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस बड़ा अप्रोप्रिएट है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि पहले आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम के होते थे आज से 100 साल पहले, और तब फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता था क्योंकि एल्यूमिनियम इज ए हैवी वेट मटेरियल। और धीमे धीमे ये जो स्मार्ट मटेरियल्स का जमाना आया और रिसर्च बढ़ी, तो आज की डेट में कंपोजिट्स यूज हो रहे हैं। तभी आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट्स जो हैं, आज व्यक्ति चांद तो छोड़िए, मंगल पे और दूसरे ग्रहों पे जाने की कोशिश कर पा रहा है, क्योंकि ये मटेरियल्स बहुत लाइट वेट हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जो कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं, आज इसरो और नासा जो है वो सन की स्टडी करने के लिए सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ये इन्हीं स्मार्ट मटेरियल्स की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर सस्टेन कर पाना ये सामान्य मटेरियल्स के लिए संभव नहीं है। तो स्मार्ट मटेरियल्स, नॉवेल मटेरियल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये जो है इनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है और इनका ज्ञान होना भी आप सभी को बहुत जरूरी है। तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये बहुत सक्सेसफुल होगी। थैंक यू। Thank you so much, Principal Sir, for your valuable thoughts. Now, I think everyone present here, all dignitaries, faculty members, audience, and the students. Now I request everyone to join us for the high tea outside the Jashn Would auditorium. now like to update on the participants of the ICNMA 2025. I am thankful to all dignitaries on the dais and faculty members who have come from the various institutions and from all students. Invite all of you for a high tea. शिक्षकों के लिए और डिग्निटरीज के लिए अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में व्यवस्था है, विद्यार्थियों के लिए सामने व्यवस्था है। इसके बाद नया सेशन इसी हॉल में हम कंटिन्यू करेंगे। 15 मिनट में वी विल बी बैक हियर। थैंक यू। Would now like to update on the